Hello, good morning. Today we will discuss the most important chapter of class 10, that is trigonometry. Most important chapter for the basic as well as standard. Now we will not discuss too much in details. Just we will elaborate क्योंकि एग्जाम्स आपके बहुत नियरर में है. So कुछ की फैक्टर्स टर्म्स एंड द फार्मूलाज दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटीज वो एक बार देख लेते हैं. बाकी सब तो ऑलरेडी आप लोग अभी पढ़ रखे ही होंगे. कमिंग बैचेस के लिए काफी लंबी वीडियोस डिटेल में वीडियोस बनेंगे. For now, just for the basic as well as standard for the class states, we will see over what's trigonometry, why is it used, and why and how. Let's see when to use the trigonometry and how to classify that whether the question is of trigonometry or not. See, trigonometry generally used when a triangle is in right angle triangle. You know it very well. What is right angle triangle? An angle measures of 90 degree. That is of right angle triangle. See, trigonometry can only be used whether the triangle is 90 degree. ठीक है? चलो. First of all, trigonometry right angle triangle में हम यूज करते हैं. Let it be named as A, B and C. Now, trigonometry में आपको फाइंड क्या करना पड़ता है? See, you know it very well that Pythagoras theorem को हम यूज करके Pythagoras theorem को generally we use to find the sides of a given triangle of a right angle triangle. ठीक है, ध्यान रखें right angle triangle पे हम Pythagoras theorem यूज करते हैं to find the any side of a triangle. But just remember या फिर just एक बार सोचते हैं कि to finding the Pythagoras theorem of any a side, the two conditions will be required. First one is either the sides of any two sides, and second, if it's not given the sides of any two sides, then what's the relation between the two sides must be given. Then only you'll be able to find the sides by using the Pythagoras theorem. Where trigonometry helps you to find the value of the sides without knowing the measurement of the two other sides or one other sides. Okay, where the trigonometry used. So let's see क्या क्या चीजें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने पड़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज 6 ट्रिग्नोमेट्रीज में है, दैट इज द साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेकेंट, सेकेंट एंड कॉन्टेंजेंट. सी, ये जो नेम्स हैं, ये नेम्स पूरे फुल फॉर्म में है इसकी. जनरली वी डोंट यूज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है ना. सो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कॉट, these are the 6 trigonometries जिसको हम यूज करेंगे टू फाइंड द साइड्स. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू यूज इट. इसको हम कैसे यूज करें, वेयर टू यूज. से बहुत इजी तरीके से है, कोई भी एग्जांपल्स लेके या वैल्यूज लेके हम समझ सकते हैं. The most important factor is from where you are observing, means which one is your angle, from here you are observing or from here you are observing. That is the theta and that is the phi. Phi in class 11 you will study, class 10 theta only. So from where you are observing, see, you know it very well that hypotenuse is the longest side of a right angle triangle, but memorize this, it may be perpendicular, it may be base, it may be perpendicular or it may be base. Hypotenuse हमेशा आपके सेम रहेंगे, it cannot be changed. Perpendicular base आप आगे पीछे कर सकते हो, that totally depend कि आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो. So you are observing the triangle from this side or from this side. If you are observing, now please remember, if you are observing from this side, the opposite side of the angle makes a perpendicular and other one will be the base. And if you are observing from this side, you see the opposite side of this angle, the opposite side of this angle makes a perpendicular and this one is a base. मैं आपको clearly करके दिखाता हूँ. See, suppose this is a triangle and this one is a another triangle named as A, B, C and P, Q, R. See, makes an angle of 90 degree. If
You are observing from here. So in this case, this will be your perpendicular, this will be your base, and this will be your hypotenuse. But in this case, suppose you are observing from here. In that case, this will be the perpendicular, the opposite of this angle. See, the opposite side of this angle is the perpendicular, the other one will be the base, and the third one is the hypotenuse. ये दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको whenever you are doing the question, that from where you are observing. क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ मिलेगा either you are observing from R or P, or it may be given that angles from these angles or from this angle, from this angle you are observing. जिस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो वहां से लेटर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि व्हाट्स द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या आ जाते हैं. फर्स्ट इसको हम थोड़े डिटेल्स में देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस आती है. सो सी, साइन, cos, tan, cosec, sec, and cot. See, now the question is, sir, why these three here, these three are here? See, this is the reciprocal कह सकते हो या opposite कह सकते हो इसके, ठीक है ना, इसके रेसिप्रोकल होते हैं ये. दैट्स व्हाई रिटन ओवर 3 एंड दिस वन इज द 3. ये आपके शॉर्ट में लिखे हुए हैं. सी, आप इसमें थीटा लगा दो. थीटा किसी भी एंगल को मेजर कर रही होती है, ठीक है ना. इट मे बी फ्रॉम 0 to 90, दैट इज एक्यूट एंगल कोई भी हो सकती है, मोर देन 90 भी नहीं हो सकती. आपसे 90 यहां होगी. क्लियर? एक्यूट एंगल कोई भी हो सकती है. नाउ व्हाट इज द sin theta? How to memorize or how to see? Now the question is कि सर आपको ये चीजें मिली कहां से, या ये चीजें है क्या, ठीक है ना. तो देखो, कहीं से कुछ भी चीजें नहीं है, हमें कहीं से कुछ भी चीजें नहीं मिली है. वेरी सिंपल. P डिनोट कर रहा परपेंडिकुलर, H डिनोट कर रही है हाइपोटेनस, B डिनोट कर रही है बेस. सिंपल सी बात है. So if you need to find sin theta, P by H, cos theta, B by H, tan theta, P by B, cosec theta, H by P, sec theta, H by B, and cot theta, B by P. Easy. Now the question is, how to memorize it? इसको हम memorize कैसे करेंगे? देखो, ऐसे आपके इंटरनेट आपके बहुत सारे मिल जाएंगे आपको. Easy word में मैं आपको बता देता हूँ कि how to memorize it. मैं भी लिख भी दूंगा आपको. See, S denote for sum. This will be people have. This will be curly brown hair. Turn permanently black. Simple. Some people have curly brown hair, turn permanently black. Simple. आप इस तरीके से मेमोराइज रखोगे. And these are the reciprocal of this. See, P by H will be H by P, P by H will be H by B, and P by B will be B by P. The only factor is from where you are observing. In a triangle, from you are observing from this or from this angle. You are observing from this or from this. According to that angle, perpendicular and base will be changed. Hypotenuse जो है आपके जैसे हैं वैसे रहेंगे. Hypotenuse से in both the cases hypotenuse are same, but ये दो जो sides हैं, that is the perpendicular and base, ये change होंगे according to the angles you are observing. Is it clear? Now let's see, sir, how to solve it, how to value. Okay, just wait. चलो, ओके. सो बहुत इजी है. पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग बहुत इजीली फाइंड कर लेते हो. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, ठीक है. सपोज अ ट्रायंगल नेम A, B and see this makes an angle of 90 degree. See, you are observing from here. Suppose you are observing from here, and it's given that BC is the 3 centimeter and this is the 4 centimeter. So what will be the AC? You know it very well by using Pythagoras theorem. AC square will be AB square plus BC square. किसी को अगर ये नहीं पता है, ऑलरेडी सबको पता होगा, but if you anyone, so hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. Just plot the value and you get the value of AC square will be. So AB, that is the 4 square, BC, that is the 3 square.
So 16 plus it will be 9, that is 25. Okay, so AC will be root under 25. देखो यहाँ रूट है आपके, क्लियर, सी रूट, यहाँ से रूट जब लगती है तो स्क्वायर लग जाती है. ओके, AC will be what the root of, वेरी वेल, 25 की 5 होती है. नाउ सी द डिफरेंस. मैं आपको दोनों दिखाऊंगा फ्रॉम एंगल्स, दोनों से जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या मिलेंगे. सी, इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम सपोज C, that is the from here, so what will be sin C? अभी जैसे कहते हैं some people have, it will be people and have. So from here you are looking, what will be the, this will get the value as 5. Now people, that is the 4, and have, that is the 5. Some people have. Next again cost, that is the cost, early brown hair. So this is brown hair. So what will be from here you are looking, brown hair, so it will be 3 by 5. Next it's a tan theta, that is the tan C. So tan permanently black. See, permanently black, so it will be tan permanently and black, so it will be 4 by 3. Now if you say sir what's the opposite sign, that is the cosecant, that is cosec C will be just reciprocal of this, 5 by 4. Cos, that is the sec C will be reciprocal of this, that is 5 by 3, and tan reciprocal of this, that is the cot, that is 3 by 4. See, you got the value of this where you are observing from C. Now let's take another, that is when you are observing instead of C you are observing from A. In that case, see, sin A. So if you are observing from here, the opposite will be perpendicular. What is the sign? Sign, that is the sign, that is some people have. You are observing from here, so it will be people and it will be have. So 3 by 5. Next cos, it's curly brown hair. So brown and hair, so it will be 4 by 5. And what will be the tan? Turn, that is the permanently and black, permanently and black. See, from here you are observing, so this will be the perpendicular, the opposite side of the angle is perpendicular, so for people and B, that is the 3 by 4. Again the reciprocal of this, so cosec theta will be, that is cosec A will be 5 by 3, sec A will be 5 by 4, and cot A will be 4 by 3. So you got the difference. See, from if you are observing from C, you got the value of sin as a 4 by 5, and where if you are observing from A, you will get the value of as a 5 by 3. समझ में आ रहा है? दिखाई दे रही है साइन में क्या डिफरेंस आ रही है. साइन C से देख रहे हो तो 4 by 5, साइन A से देख रहे हो तो 3 by 5. cos C 3 by 5, cos A 4 by 5. tan C, that is 4 by 3, tan A, that is 3 by 4. जैसे ही एंगल्स चेंज होंगे, परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाएगी. These are the basic terms जो आपको ध्यान रखने हैं. कहाँ मिलेंगे आपको? सो अगर आप बेसिक के स्टूडेंट हो, बेसिक अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपको इस तरह के कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं. सपोज दैट sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B और समथिंग C, लाइक सपोज दैट इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम में. ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर C प्लस थ्राइस ऑफ cos स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको कहेगा इवैल्यूएट करके एक आंसर बता दो. तो सिंपल यहां पर ऑब्जर्व करनी पड़ेगी. सी, sin आपको A से चेक आउट करने हैं, cos आपको C से चेक आउट करने हैं. तो दीस आर सब टर्म्स जो आपको यहां पे कहते हैं. बेसिक्स में ज्यादा करके स्टैंडर्ड्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके. नाउ